ठाणे वागळे स्ट्रीट येथील टिपटॉप प्लाझा येथे ठाणे डॉक्टर फाउंडेशनचा उद्घाटन सोहळा अतिशय उत्साहात संपन्न झाला। यावेळी कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून हृदय शस्त्रक्रिया तज्ञ डॉक्टर अरविंद सिंह गहलोत होते। त्याचबरोबर ठाणे डॉक्टर फाउंडेशनची कमिटी स्थापन करण्यात आली आणि ह्यात प्रामुख्याने डॉक्टर अशोक तिवारी यांची अध्यक्षपदी तर डॉक्टर शंभू सिंह यांची उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली। तसेच डॉक्टर गिरीश प्रजापती सेक्रेटरी, डॉक्टर विनोद यादव खजिनदार, डॉक्टर सानिया शहापूरकर लेडीज विंग चीफ, डॉक्टर प्रशांत शेगोकार, डॉक्टर निलेश होल, डॉक्टर उमेश प्रजापती, डॉक्टर JB यादव, डॉक्टर RN केवट, डॉक्टर मोहन कोष्टी, डॉक्टर मारिया आशीर्वादम, डॉक्टर सोनाली पुरुडकर, डॉक्टर मुग्धा गोडबोले, डॉक्टर नीपा गणत्रा, डॉक्टर सुहासिनी मिश्रा, डॉक्टर शोभा सिंह, डॉक्टर श्वेता देशमुख या सगळ्यांची ठाणे डॉक्टर फाउंडेशनच्या वेगवेगळ्या पदी निवड झाली। कार्यक्रमाच्या वेळी हृदय शस्त्रक्रिया तज्ञ डॉक्टर अरविंद सिंह गहलोत यांच्या व्याख्यानाचं आयोजन उपस्थित डॉक्टर वर्गांसाठी करण्यात आले होते। या व्याख्यानाचा फायदा डॉक्टरांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात रुग्णांची सेवा करताना होणार आहे। ठाणे डॉक्टर फाउंडेशनच्या माध्यमातून वेगवेगळे सामाजिक उपक्रम राबवण्यात येणार आहे। तसेच गरीब गरजू रुग्णांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तिवारी यांनी महाराष्ट्र 24 तास न्यूज चॅनलला प्रतिक्रिया देताना दिले। Foundation forward. To the newly installed team, this is not a position, but a commitment. A commitment to serve the Thane Doctor Foundation will scale new heights and create a meaningful impact in both and the society at large. Now I will take a deep breath, because you're about to witness something truly spectacular. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. जोरदार तालियों के साथ now I would like to invite Surutar ma'am, please take off. Now, I would like to invite Thane Doctor Foundation, Dr. Sanya Shahapurkar madam. एक बार फिर से उनके add great strength to our team. To invite Dr. Waris Yadav sir, Media and Public Relations Secretary. I would like to invite a personality. Now it's time
One more last. Okay. Okay. Thank you. सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझ पर विश्वास जताया है। शुरुआत एक छोटी सी शायरी से करना चाहूंगा अशोक तिवारी सर के लिए और पूरी टीम के लिए और सभी लोगों के लिए। विश्वास की जो डोर आपने थमाई है मुझे, उसे ईमानदारी से निभाना मेरी जिम्मेदारी है। हर कदम पर पारदर्शिता रखूंगा मैं, यह मेरी आप सबसे सच्ची वफादारी है। Being a part of medical fraternity, we all understand responsibility, ethics and trust. Just like we are accountable for our patients, I will remain equally accountable for the financial health of our foundation. थोडक्यात सांगायचं असेल तर ट्रेझरचे काम फक्त पैसे सांभाळणं नाही आहे, पण प्रत्येक पैशाचा योग्य उपयोग होत आहे का ते पाहणं पण आहे. As a treasurer, I will ensure that every rupee is managed wisely, records are properly maintained, and all transactions remain transparent and accountable. मराठी सांगतो, मी खात्री देतो की फाउंडेशनचा प्रत्येक खर्च योग्य ठिकाणी आणि योग्य कारणासाठीच केला जाईल, ज्याचा फायदा आपल्या मेडिकल कम्युनिटी आणि समाजाला होईल. My vision is to build a strong and transparent financial system with proper planning and timely reporting and complete clarity. साथ में मैं सभी सीनियर डॉक्टर्स, कमिटी मेंबर्स के साथ मिलकर टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि हमारी फाउंडेशन नए आयाम स्थापित कर सके. आपल्या सर्वांचा मार्गदर्शन आणि सहकार्य मला पुढेही मिळत राहील अशी अपेक्षा आहे. अंत में एक छोटी सी शायरी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा. न जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे, न विश्वास को टूटने देंगे. हर फैसले में ईमानदारी रखकर इस सफर को आगे बढ़ाएंगे. आपका भरोसा हमारी ताकत है, इसे हर हाल में कायम रखेंगे. Once again, thank you for your trust. I will fulfill this responsibility and with honesty, dedication and full commitment. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र, जय वीर. बहुत ही सुंदर स्पीच था आपका, मार्गदर्शन था. एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए डॉक्टर विनोद यादव सर. Now I would like to invite Dynamic Secretary of Thane Doctor Foundation, Dr. Girish Prajapati sir. Please welcome with a big round of applause, Dr. Girish Prajapati. Dr. Arvind Singh sir, our guiding light, our guiding force, our president, Dr. Ashok Tiwari sir, all my colleagues of First Managing Committee, all the dignitaries, all the seniors who are present here, all my friends, good afternoon to all of you. Arvind sir, his present today gives the TDF the strongest possible start. Sir has mended thousands of hearts by blessing us. Sir has given a heartbeat to this foundation. तो सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद. आज मैं भले ही यहाँ पे एक सेक्रेटरी की हैसियत से खड़ा हूँ, बट मैं आप में से ही एक डॉक्टर हूँ. A doctor who believes that together we can do more than we ever could do alone. दोस्तों कहते हैं ना कि अकेला चिराग बुझ जाता है आंधियों में, अकेला चिराग बुझ जाता है आंधियों में, मगर जब कतार बन जाए तो रोशनी बन जाती है. और टीडीएफ वही कतार है, वही रोशनी है. टीडीएफ का मतलब आप लोग कोई थाने डॉक्टर्स फाउंडेशन बोलता है, कोई तिवारी डॉक्टर फाउंडेशन भी बोलता है. टीडीएफ का एक और मीनिंग है, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग ऑल द डॉक्टर्स इनटू वन फैमिली, जो उसकी एक्चुअल मीनिंग. वी आर वन फैमिली, इसलिए हम लोग कभी भी ग्रुप में भी हम लोग टीडीएफ फैमिली बोलते हैं कि आपका सर यू आर वेलकम टू द टीडीएफ फैमिली. And TDF is not my foundation or not my association or my committee's association. It is your foundation. आज से हम लोग
कि आप कर रहे हैं, आप हो, आपका एसोसिएशन, आपको बहुत थैंक यू, आपको बहुत धन्यवाद। नहीं, ये सब नहीं कहना है। एकला चलो रहे नहीं आज से होगा, हम साथ चलेंगे, ये वर्ड हम लोग बोलेंगे। हम एक हैं, एक फैमिली में, यहाँ कोई मैं नहीं, कोई तू नहीं, सब हम हैं। सो आई आस्क यू टुडे, क्योंकि ये नई जर्नी है, नया विश्वास है, हमको ज्वाइन करिए, ओन अस, क्वेश्चन अस, गिव अ नेगेटिव फीडबैक अबाउट अस। पॉजिटिव तो सब कहते हैं, हमारे बारे में जहां हम गलती करेंगे काइंडली पॉइंट आउट अस कि आपसे ये गलती हो रही है, सो दैट वी कैन करेक्ट। बिकॉज हमें एक इसका दूरी बहुत आगे तक तय करना है। मेरे कुछ साथी यहाँ पे बैठे हैं जिनको कमेटी में बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने सामने से भी हाँ बोला था, सामने से उन्होंने अप्रोच किया था। बट कैसा है, मैं आपको इस मंच से, स्टेज से एज ए सेक्रेटरी आपको टीडीएफ की तरफ से सॉरी बोलना चाहता हूँ। बिकॉज देखिए, टीडीएफ हमारा जो कमेटी है उसकी एक लिमिट है। कमेटी की लिमिट यानी 21 लोग को ही हम ले सकते थे, और हमारे पास तो वर्क फोर्स इतना है कि हमारी कमेटी 50-60 की हो जाएगी, लेकिन एक लिमिट होता है 21 की कमेटी। तो बहुत बहुत सॉरी मेरी तरफ से। बट आप लोग, डॉक्टर संदीप सर, डॉक्टर विजय, डॉक्टर भूषण, जिसने ये वीडियोस बनाई हैं, जो वीडियो आपने देखा होगा, उस भूषण लड़े ने बनाया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर नियाज सर थे, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। कटरिया सर फोन किए कि मैं आपका एडवाइजर हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा हमारा वर्किंग फोर्स है जो आपको आज यहाँ स्टेज पे नहीं दिखा, बट हमारे दिलों में हैं, हमारे हार्ट्स में हैं और हमारे साथ हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हम एक दो लोगों का काम नहीं है, ये हम सब मिलके जब इसको आगे लेके जाएंगे तभी टीडीएफ आगे बढ़ेगा। ये आप लोगों का विश्वास और प्यार ही है और साथ है जिससे हमें आगे बढ़ने को प्रेरणा मिलती है। बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ योर ट्रस्ट एंड सपोर्ट, TDF could complete 34 CMEs in 8 to 9 months. This one is the 35th. We organize medical camp in the school. We organize a cricket tournament, and soon we are going to organize a tournament for cricket tournament for ladies and gents both. बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज आने वाली है, बट आवर कोर वैल्यूज, कोर में जो कोर है, जो मैं कमिट करना चाहता हूं यहां से, आवर फर्स्ट कमिटमेंट फ्रॉम दिस स्टेज इज यूनिटी बिफोर एवरीथिंग। हम एक ही, हमारा एक ही धर्म होगा, दैट इज यूनिटी। हमारी एक ही भाषा होगी, दैट इज यूनिटी। लर्निंग एंड अर्निंग टुगेदर। हम टीडीएफ का एक पहले से ही हमने सोच के रखा है कि विल ऑर्गेनाइज क्वालिटी CMEs। हमने इसके लिए ECG लेक्चर सीरीज रखा था जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, एंड दैट सीरीज वाज वंडरफुल। बहुत सारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और आज भी उठा रहे हैं, बिकॉज वो ग्रुप अभी भी एज इट इज है। जिसकी भी ECG की कोई भी क्वेरीज होती है, तुरंत आंसर आ जाता है। We as a TDF will serve humanity because हमारा टैगलाइन ही है यूनाइटेड इन हीलिंग। सो फॉर दी सोसाइटी, जो भी कैंप करना पड़ा, जो भी सोसाइटीज को जब जब नीड आएगी, टीडीएफ सबसे पहले रहेगा। एंड लास्ट, आज आपण सर्व आज इथे शपथ घेऊया की आपल्या कॅडोसिस मधील हृदय जे आहे कायम जिवंत ठेवू। आपल्या नावातील जे युनाइटेड शब्दाला आहे ते जगू आणि हिलिंग हाच आपला एकमेव धर्म मानू। आमचे हात वेगळे असले तरी ध्येय एक आहे, स्पेशलिटी वेगळी असली तरी वेदना एक आहे। टीडीएफ, जिथे मी आणि तू नाही, जिथे फक्त आपण आहोत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज के हमारे उन सबका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। सर, टीडीएफ का एक ऐसी कहानी है कि हम सोच रहे थे कि टीडीएफ यानी ठाणे डॉक्टर फाउंडेशन, पहले हमारा बात हुआ कि ठाणे डॉक्टर फेडरेशन, फिर हुआ ठाणे डॉक्टर्स फोरम, बट अल्टीमेटली सेक्रेटरी कमिश्नर के यहाँ जब हमने नाम दिया तो गए नहीं,
आपको ठाणे डॉक्टर फाउंडेशन ही मिलेगा। सब मिला के सब में ये आ रहा था तो TDF हो गया है सर, और आज सबके जवान पे सर TDF चल रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो सर ये मुकाम कैसे हुआ मुझे पता नहीं, ये अकेले का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब हमारी जो टीम और साथ साथ में जो 650 हमारे जो मेंबर हैं सर, उन लोग का जो विश्वास, प्यार और जो भरोसा था हमारे ऊपर कि ये लोग सब कर सकते हैं, और उन्होंने जो भरोसा दिलाया या जो भरोसा दिया है, तो उन पे हम खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही मैं सर एक कहूँगा अपनी टीम से कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको आगे ले जाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे इतना गर्व है हमारी टीम पे कि ये सब जितने हैं एक से एक धुरंधर हैं, सब काम करने के लिए सब इतने सब उत्साहित हैं और एक्टिव हैं कि मैं उनके लिए कोई शब्द बयान नहीं कर सकता। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, सभी एक से बढ़कर एक हैं। तो आज ठाणे डॉक्टर फाउंडेशन, जिसका 15 अप्रैल को हमको रजिस्ट्रेशन मिला है, और साथ ही आज 24 तारीख आज इसका इंस्टॉलेशन सेरेमनी और साथ में इनॉग्रेशन। जब मेरे मन में आया कि इसका इनॉग्रेशन इंस्टॉलेशन करना है, तो मैंने अखिल से कहा, अखिल हमारे जो मार्केटिंग है देखता है टीम, बोला डॉक्टर अरविंद सिंह सर को इससे ही करवाना है। सर हमारे हीरो हैं, हैंडसम है, यंग है और डेडिकेटेड है। हमारी टीम को सर का आशीर्वाद चाहिए। और सर को सामने जब मैंने प्रस्ताव रखा था कि सर आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सर 145 को नीचे आके खड़े थे आज के दिन। 145 पे सर आके, ऐसे हम कुछ अलग काम, यूनिक काम करेंगे जो शायद TDF को एक अलग ढंग की पहचान बनी रहे। और इसकी ज्यादा समय नहीं लूंगा, सर को भी कुछ कहना है थोड़ा। और सबको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय TDF। थैंक यू तिवारी सर। जिसने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया, ये अपॉर्चुनिटी दिया, एंड to feel respected very much because I am a young person. You are very senior doctors. In your guidance, I will do the things in my life. I think it started from TDF. TDF is the first foundation I came for as a chief guest in my life. Okay. Because of your guidance, मैं थाने में बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. Everybody, I think Tiwari sir and many people know me before only. But this time, this last 6 months, I am reaching to the people. Why I am reaching to the people? Because a new technique called minimal invasive cardiac surgery came to the picture in Mumbai. Normally, many a myth in the public is there. Minimal invasive bypass surgery is only for single vessel disease, single vessel when angioplasty is not possible. But last 6 months, I am saying, मैं at least 25 surgeries in a month doing minimal invasive bypass surgery. एंड एक आर्टिकल भी शायद तिवारी सर को दिखाया था मैंने. आई हैव डन फर्स्ट 5 ग्राफ्ट मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी फ्रॉम हियर, 5 ग्राफ्ट फ्रॉम Boston हॉस्पिटल. दैट इज फर्स्ट इन मुंबई. नोबडी हैज डन 5 ग्राफ्ट फ्रॉम दिस साइड. तो नॉर्मली यू हैव सीन मेनी कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियक सर्जन्स, यू हैव गॉन टू देयर. वो पूछते हैं कि क्या होगा, एवरी सर्जरी इज पॉसिबल और मिनिमल इज पॉसिबल और नॉट. इन एवरी patient bypass, minimal invasive bypass surgery is possible 99% of the time. If the minimal invasive surgery is not possible, then the patient is not for bypass, it is only for medical management. So I start my topic. Cardiac surgery is arrested heart, with the heart closed, then do the surgery. Last 15 years, I think most of the surgeries are doing by beating heart surgery, where heart is not stopped and beating. Why beating is more preferable than the stopped heart? Because it is more physiological. There is no heart stopped and no need to arrest the heart and do the surgeries. That is the most important thing. Next. Before going into the minimal invasive bypass surgeries, we have to know what is the coronary artery bypass grafting. Coronary artery bypass grafting is the grafting, the gold standard treatment for the patients with extensive coronary disease. The procedure creates a new pathways for the blood flow by grafting healthy vessels to the bypass blocked or narrowed coronary artery.
Then what is the meaning of the coronary artery disease? Coronary artery disease is the disease in the coronary artery which is supplying the oxygen and the nutrients to the heart, which is backed by atherosclerotic plaque and narrowing of the heart. Next. What are the indications of the coronary artery bypass grafting? The most common indications are the left main coronary artery disease. Second one is the triple vessel disease with severe calcification in which the angioplasty is not possible. Third one is the failed angioplasty in which the pain and hemodynamic instability is there. Fourth, and sometimes you have known this only triple vessel disease is known for the CA disease, but not in single vessel disease and double vessel disease passed by the cardiologist. Then we have to do bypass like minimal invasive bypass or conventional bypass. Next one. There are two type of bypass surgery you already know. This is the on-pump surgery and this is off-pump surgery. On-pump surgeries are with the cardiopulmonary bypass, and in the cardiopulmonary bypass there is the essential component is heart-lung machine. What is the heart-lung machine? Heart-lung machine is the CPB temporarily takes over the heart and lung function during surgery, maintaining the blood circulation and oxygenation while the heart is arrested using cardioplegia solution. So what are the key components of pump? There are the pump oxygenators. I will show the diagram in the next slide. The pump oxygenator got the gas exchange, roller or centrifugal pump, and heat exchanger for temperature control, and cardioplegia delivery system. Other one is the off-pump or called as beating heart surgery. Off-pump surgery is performed on the beating heart without CPB. The surgery is performed through a chest incision outside the heart. Then no need to cut the heart open. There is a myth. There is a bypass surgery, the open heart surgery. It is not an open heart surgery. We can say it is open chest surgery because we are doing bypass on the outside of the heart. That is called epicardial vessels. We have to bypass. There is no need to cut the heart open. In wall surgery, we have to cut the heart open, but bypass we don't need to cut the heart open. The technical advantage of beating heart surgery, heart continues beating throughout, so there is more physiological. No cardioplegia arrest required, so there is no chance of inflammatory reactions because of the heart arrested. And mechanical stabilizer, immobilize the target area. In this area, how can we perform the beating heart surgery? There is a process called octopus stabilizer. It will stabilize only the part vessel which we have to bypass. Other heart is completely moving and is generating the BP. That's why it is called beating heart surgery. But only the part which we have to bypass is stable. I will show you the diagram in the next slide. Next one. What are the benefits of off-pump surgery? There is no need to arrest the heart, so there is a myocardial protection. The avoidance of the global ischemia and reperfusion injury preserve the myocardial function and reduce the transfusion. When we have to go on the pump, we have to at least 1000 to 1200 ml of the circulation fluid. We have to dilute the blood. That's why we require blood transfusion in on-pump surgery, but not in the off-pump surgery. Significantly reduce the incidence of blood transfusion requirement. And last is the shorter hospital stay. I think you have सुना होगा आप लोगों ने पहले से कि after bypass एक दिन दो दिन वेंटिलेटर पे रहते patients. But my experience is at least 4 hours is the maximum. 90% of the patients are extubated in 4 hours. And nowadays in minimal invasive bypass, last 10 में से मैं 5 patient on table extubate किया है, extubated on table and discharged on day 4. This is my dream to discharge patient on day 3. Next. These are the pathophysiological benefits. I already told you: global ischemia, reperfusion injury, systemic inflammatory response to CPB, hemodilution, and coagulopathy. And when we stop the heart, again we have to start the heart. That time there is a free radical generation is also there. That also harm the patient. That's why beating heart surgery is always better than the on-pump surgery. Next. But in past there was an absolute contraindication to the surgery, like preoperative hemodynamic instability. Sometimes patient does not maintain the
BP, then we have to go on pump. That is the only absolute contraindication. And deep myocardial already that was considered as a contraindication, but nowadays I don't have any patients have deep endocardiomyopathy and I have to go on pump. Most of the time we do a beating heart only. Last is a moderate to severe mitral insufficiency. Remove the valve also and repair the valve also. So that time we have to go on pump because of the valve. Then we have to do bypass also with the on pump surgery. Relative contraindications are relative, but I have done all of these in beating heart surgery like pulmonary hypertension, diffuse coronary artery disease, dense myocardial effusions, and ascending aorta affect the positioning, and left main plus non-reconstructible disease like diffuse coronary artery disease with end artery is required. Then sometimes we have to go on pump, but rarely nowadays. These are specially made for 15 years, 10 years back. Next. And next. So this is the coronary CPB pump. What is the CPB pump called? There is. This is SVC and IVC. From here, the blood goes to the reservoir to blood goes to the oxygenator. From oxygenator, the blood goes to the pump. From the centrifugal pump, the blood goes to the whole body from the ascending aorta. That is the circuit of the cardiopulmonary bypass we have to go. So initially, when I go to the MCL, initial 3 months, I don't know where is the blood going, where from coming. That is my problem. So that is not easy to understand, but it's the time when मैं थोड़ा बहुत तो try करूँगा बताने के लिए क्या होता है रियल में. बहुत लोग बोलते हैं पंप होता है. What is the pump? It is like that. Unoxygenated blood आता है और पंप में reservoirs to oxygenator में जाता है. From there it goes to the pump. पंप से पूरा बॉडी में करता है. Then तो lungs and heart का both का works ये पंप कर लेता है. There is no need to heart का वर्क्स एंड नो नीड ऑक्सीजनेट होता है, लंग का काम होता है एंड पंप करता है मतलब हार्ट का काम भी ये सीपीबी कर लेते हैं. नेक्स्ट हाँ, दिस इज द पंप. दीज आर द 4 पंप रोलर्स पंप रहते हैं. दीज आर द पंप. दिस इज हीट हाइपोथर्मिया, हार्ट हाइपोथर्मिया. तो टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ द बॉडी बाय हाइपोथर्मिया मशीन एंड द दिस लुक लाइक दिस इज द रिजर्वायर. From here come like reservoir. Next. This is the reservoir. From there it goes to the pump, and from there it go to the heart. Okay. Next one. On pump disadvantage I already told you. Systemic and inflammatory response, the reperfusion injury, hemodilution effects like, and contributing pathophysiological factors are ischemic arrest duration, free radical generation, repeat peroxidation, rapid pH changes, reperfusion injury, leukocyte activation, hypothermia effect, and myocardial edema. Because of the heart arrested, these all are affected on the heart. We have to avoid by beating heart surgery. Increased complications like in all pump surgeries like atrial fibrillation, mechanical ventilation more than 10 hours, ICU stay more than 48 hours, and hospital stay more than 7 days. Nowadays, beating heart surgery, most of the patients are goes on home within 5 days or 6 days. Sometimes patient told me, sir, मेरे को नहीं जाने के घर पे, 1-2 दिन रुको, तो वो पैकेज में 7 days रहता है तो. But in general, 5 days में patients are ready to go home. Conduit selection, I think it is the most commonly asked questions. Which conduit you are using? Lima, Rima, you have heard Lima, Rima name. So most commonly used conduits are greater saphenous vein, then left internal mammary artery, then right internal mammary artery, and right radial artery. So I am using what I am mostly using in private patients. Most of the patients we are doing Lima, Rima Y from the chest, open heart, and in the minimal invasive bypass surgery, I do Lima radial Y. But nowadays, sometimes patients का रेडियल खराब रहता है, sometimes तो मैंने 2-3 पेशेंट का लीमा भी किया है. But we have to tell patients if length रेडियल का उतना नहीं आया तो हमको एक्स्ट्रा दूसरा कंड्यूट भी लेना पड़ सकता है. We can tell them, but most of the time हो गया अभी तो प्रॉब्लम नहीं आया. But we have to tell before only कि the radial is not functionally
we have to do Allen's test if radial is not functional or not. Next. Normally we have this is the diagram how do we do proximal anastomosis and distal venous graft. Venous graft it is a partial clamp on aorta. From here we have to start one venous graft. From there it has to go to the heart का ये vessels रहते हैं LAD. From there it has to go to LAD or venous graft. I have to explain. Next. Lima-Rima graft. What is the Lima-Rima Y graft? It is the gold standard configuration because of the patency of the graft is more than 50 years, 20 years. I have done operated patient 30 years back. Patient operated in 1989. In 2016 we have to revise the graft, but that time Lima was functioning. Only venous graft was blocked. So Lima is such an important graft in Lima to LAD because LAD is supplying 70% of the heart, and Lima to LAD is the most important graft for them. That is the advantage. So Y graft is performed by connecting the left internal memory artery to the left anterior descending artery, while the free right and internal memory artery connected to the Lima side. It is like I'll show you the diagram how the Lima is performed. Next. This is Lima. This is Lima. From here we make Y of the Lima. Okay. This is Lima. So from Lima we can do diagonal LAD from this side anastomosis from this surface, this ventral surface we have to do that surface and that. And from इतना लंबाई मेरे पास है आगे मैं 2-3 कितना ग्राफ कर सकता हूँ from Lima. So it is like this. We have done Lima to diagonal and LAD here. From ये heart के behind round हो गया पीछे से जो भी क्योंकि OM and PDA and other branches are behind the heart, तो वो थोड़ा दिख नहीं रहा है इधर से उधर से. I'll show you the video of minimal invasive and open surgery bypass also. From you can see how we do minimal invasive and normal bypass. The two major advantages are the memory arteries remain attached to the subclavian artery, so there is no need to have the proximal flow. It is a natural flow. This is no only distal part is to connect the heart, then proximal part has to naturally flow. And second is the durability. And especially I am saying of the Lima का ऐसा रहता है, especially अभी अब हमने किया है bypass. It is a 2 mm vessels. You can do angiography after 6 months or 1 year. Size increases with the time. Size increases to 3 mm after 1 year because of the requirement in increase its size because there is a less smooth muscle to stop the size increase. So Lima is especially Lima is beneficial especially in this also. Less smooth muscle. Next, this is the first patient I have done 6 years back minimal invasive bypass. That is the diagram. I'll show you the next. It is not next. It is the patient. This is the minimal invasive bypass graft. This is the minimal invasive bypass graft. This is the after 3 months of minimal invasive bypass graft. We cannot see the difference. उनकी खुद की लाइंस जैसे ही लगता है, खुद का जो नॉर्मल चेस्ट लाइंस है वैसा ही दिख रहा है. यू कैन नॉट मेक आउट आफ्टर 3 months के इट इज मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी. इनका वीडियोस भी मैं आपको बताता हूँ. नेक्स्ट, इट इज आल्सो सेम. ये मिकास मिस्त्री ग्राफ्स का वीडियो. ये लीमा रेडियल वाई है, दिस इज लीमा टू LAD एंड दिस इज OM. दिस इज OM एंड this one is again is the PDA. राइट का ग्राफ्ट में हमने किया है. that is the minimal invasive 3 ग्राफ्ट सर्जरी. तो अपन ने ऐसा बोलते हैं नॉर्मली कि 1 ग्राफ्ट करते हैं, 3 ग्राफ्ट का तो मैं तुम्हारे सामने वीडियो पेश कर दोबारा एक बार बता दूं, दोबारा बताइए जस्ट वन मोर टाइम. that is Lima radial Y, that is Lima to LAD एंड ये यहाँ पे घूम के आ रहा है पीछे जो जा रहा था उस टाइम ठीक है. that is OM and this one is PDA. PDA is normally right का distal branch होता है. We have to right से करने के लिए that is a PDA graft. So it is the Lima radial Y with Micas with 3 grafts. Next one. You can. इसमें we have done LAD में 2 grafts किया, then 1 OM graft, 1 is ramus and then PDA. We have done 5 from this one. Both are visibility इतना नहीं because small incision is very small.
you cannot make out easy, but 30 grafts you can make out. This is the 5 grafts surgery we done from them. You can next madam. ये नॉर्मल ओपन सर्जरी का इट इज नॉट बिकार इट ओपन सर्जरी विद 5 grafts का सर्जरी. You can start. This is lima radial Y, lima Y. This is diagonal, this LED, and this one is OM, this one is PDA, this one is PIP. We have to how we do grafting और कैसा हार्ट लगता है, बट दिखने में ऐसा नहीं लगता, बट हार्ट को बाद में बहुत फायदा होता है. नेक्स्ट ठीक है. ये स्लाइड्स मेरा कंप्लीट हुआ. फ्यूचर में आई कैन हाउ इन नेक्स्ट 5 years विल नॉट ओपन चेस्ट फ्रॉम दिस साइड, विल डू फ्रॉम साइड ओनली. अभी तो कोई भी पेशेंट आता है ना, मोस्ट ऑफ द पेशेंट आई से टू देम मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरीज ओनली. आई डोंट हैव टेल देम के ओपन कराओ. जिसके बाद बट इसका एक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली थोड़ा बहुत रहता है इंश्योरेंस का, बट अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है एवरी पेशेंट गिव मनी टू मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी, एवरी पेशेंट. और कुछ भी अभी कंसल्टेशन फीस हुआ, बट यू कैन आस्क एनीथिंग, आपको कुछ भी इसमें मिथ है, एवरीथिंग आई कैन आंसर. मैंने स्पेशली रीच करने का रीजन यही है कि जो भी क्वेरीज किसी के दिमाग में है तो आई कैन सॉल्व. एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. मिनिमल इन्वेजिव वी आर डूइंग 6 to 7 lakhs में, इधर भी 6 to 7 में कर रहे हैं. उपासनी आल्सो जैसे 5 ग्राफ का जो पेशेंट मैंने आर्टिकल डाला है, दैट इज उपासनी मैम का रियल नेफ्यू था, उपासनी मैम का. तो आई हैव डन दैट. एंड स्पेशल केसेस भी कर रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बोलते हैं एनआरटी का वेसल्स का कर नहीं सकते, उसका भी हमने किया. कम से कम 5 पेशेंट का किया. नाउअडेज आई डू इजीली बिकॉज आई हैव टू, मैं स्पेशली बैठ के कर रहा हूँ आजकल. पहले ओपन हार्ट में मेरे को ओपन करके सर्जरी करना पड़ता था. इन मिनिमल इन्वेजिव बाईपास आई डू फ्रॉम सिटिंग ऑन एंड डू द बाईपास. Any question or anything? हाँ? तो ऐसे double vessel के cardiologist देखते हैं because they say कैसा wire is not crossing the lesion, there is hard lesion, specific lesion, wire is not crossing, then they have to go to bypass. कल ही किया है मैंने इसमें double vessel था, third vessel normal थी but wire was not crossing, तो I have to go to bypass. मेरा कहना है कि एवरी पेशेंट वे कैन डू मिनिमल इन्वेजिव बाईपास. तुम जैसे सुनोगे कि सिलेक्ट करना पड़ता है पेशेंट फॉर मिनिमल इन्वेजिव बाईपास. देयर इज नो सेलेक्टिविटी. एवरी पेशेंट वी कैन डू मिनिमल इन्वेजिव बाईपास. देयर इज नो सेलेक्टिविटी ऑफ द पेशेंट. और कुछ भी किसी को दिमाग में कुछ भी नहीं है. लगे क्या? ओके कुछ प्रॉब्लम नहीं. बट ये जो ग्रुप में भी कभी भी किसी को भी ग्रुप में पूछ सकता है. बाद में मेरे को कुछ या तिवारी सर या किसी को भी कुछ भी क्वेरी हो एनी टाइम यू कैन आस्क. आई एम इन एवरी हॉस्पिटल इन मुंबई, यू कैन आस्क सेम. आई एम इन किम्स आल्सो, आई एम इन जुपिटर आल्सो, आई एम होराइजन, मावीज इन साउथ मुंबई, आई एम इन सैफी, बोकार्ड, Raisa Fortis. I am joining Lilavati also. Okay. Then I can be in every hospital. You can send it there also. And here in Mulund also, Upasni. I have started Indigo Hospital. I have started Navkar Hospital. First bypass of Navkar also I have started. Indigo also I have started. In Mahavir initial I have started. Kims also I have started. First 3 bypass by me only. Kims also first 3 bypass by me only. Is our understanding. Once again, thank you so much. Now it's time for registration. I would like to invite Dr. Ashok Tiwari sir to kindly come on the stage to felicitate Dr. I request Dr. Girish Prajapati sir. Wait. One more. Wait. नेशनल एंथम के बाद सबको जाना है. रमेश शिंदे, डॉक्टर
Now it's time. मी तर मला इतकी शानदार गॅदरिंग पहिल्यांदा बघितलेली आहे. माझ्यासाठी तर एकदम चांगला अनुभव आहे. आणि अशोक तिवारी सरांचे मला हे 28 मेंबरची कमिटी एकदम चांगली वाटते मला तर एकदम. आणि फिमेल फोर्स पण एकदम भरपूर आहे. अजून काय सांगू तुम्हाला. आणि स्पेशली मला इथे बोलवून इन लोकांनी हे सन्मान दिला आहे त्याच्याबद्दल त्यांचा धन्यवाद आहे. अजून मी बोलतो की पुढे पण काही प्रोग्राम वगैरे सरांचा असेल तर माझा हमेशा हॅलो आहे. हमेशा प्रॉब्लेम नाही आहे कधीच पण मी येणार कधी. अजून सरांना पण विचारू शकतो. खूप चांगला वाटत आहे. आणि आपल्या ठाण्यामध्ये आज आमचं ठाणे डॉक्टर फाउंडेशन जे एक नवीन ऑर्गनायझेशन तयार झाली आहे ते आज आपल्याला ठाण्याच्या प्रत्येक भागामध्ये जाऊन स्लम एरिया असू द्या, झोपडपट्टीमध्ये एरिया असू द्या, आदिवासी एरिया, शहापूर असू द्या किंवा आडगाव कसारा असं सगळे आम्ही गावात खेड्यात जाऊन सेवा देण्यासाठी पण आमच्या जे आहे ते आम्ही पुढे राहणार. आणि बाकीचे बरंच काम करायचं आमचे जे स्वप्न आहे जसं ब्लड डोनेशन कॅम्प म्हणा, मेडिकल कॅम्प म्हणा, ते सगळे आम्ही जे आहे ते सगळे पूर्ण करण्यासाठी आम्ही फाउंडेशनची तयारी केली आहे. तसंच आमची एक टीम आहे 28 लोकांची. हे 28 लोकांची टीम एक डेडिकेटेड आहे आणि काम करायला सत्तर तयार आहे सर्व. फाउंडेशनचा उद्देश काय होता? उद्देश मॅडम हेच आहे आमचं की आम्ही जे इंटिरियर भागात आतमध्ये आता म्हणजे झोपडपट्टी एरिया असू द्या, स्लम एरिया असू द्या आणि बरंच असं निडी लोकांना जे गरज असतो तिथे आम्ही लोकांना मदत करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार. असा पण एरिया आहे जिथे लोकांना ट्रीटमेंट नाही होत आहे तिथे जाऊन आम्ही सेवा देण्याचा पूर्ण तयारी करणार. आज आमचे प्रेसिडेंट डॉक्टर तिवारी सर यांच्याच मार्गदर्शनाखालून आम्ही आज TDF सुरुवात केली. आज त्याचं इन्स्टॉलेशन सेरेमनी झालं आहे. आणि डेफिनेटली आमचं उद्देश हे युनिटी एक आहे. आम्ही 28 मेंबर्स आहोतच. आम्ही प्रॅक्टिसिंग आहोत आणि बऱ्याच माध्यमातून आम्ही इतरांसाठी काम करत असतो. आणि आता आम्ही तिवारी सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही TDF चालू केलं आहे आणि ते सांगतील त्याप्रमाणे आम्ही डेफिनेटली करू. महिलांसाठी इथे काय सुरुवात आता तुम्हाला सांगायचं म्हणजे आता मी क्रिकेट करतो ते लेडीज क्रिकेट पासून सुरुवात होणार आहे. तर असे बरेच प्रोग्राम्स होतील. आम्ही आतापर्यंत आज आमची 36वी CME होती विदिन 8 मंथ्स. सो या माध्यमातून देखील बरेच प्रोग्राम्स चालू आहेत. त्यामुळे महिलांसाठी देखील डेफिनेटली होतीलच. आनंद होत आहे की आमची TDF जे 8 महिन्यापासून इथे ठाण्यामध्ये काम करत होती आज त्याचा फाउंडेशन डे आहे. TDF जसं मी आपल्या भाषणात सांगितलं की TDF म्हणजे सर्व डॉक्टरांचे जेवढे इथे ठाण्यामध्ये प्रॅक्टिस करतात सर्व डॉक्टरांना सोबत घेऊन समाज कल्याण आणि आमचा मेन थीम जे आहे युनायटेड इन हिलिंग. तर आम्ही एकत्र येऊन हिलिंग हे शब्दाला जगू आणि त्याच्यासाठी आम्ही जेवढे काम म्हणजे समजा डॉक्टरांच्या CME सोबतच गोरगरिबांसाठी आम्ही कॅम्प ऑर्गनाईज करू. आणि जसं आम्ही मेडिकल कॅम्प घेतो शाळेत पण आम्ही मागच्या टायमाला कॅम्प घेतलेला आहे. ब्लड सरांनी सांगितलं जसं की ब्लड डोनेशन कॅम्प वगैरे बऱ्याचशा टायमाला आम्ही करोना काळात पण आम्ही सर्व एकत्र येऊन काम केलं म्हणून आज करोना आमच्या इथे नाही आहे. आणि आज हे एकत्र एकजुटीने आपण जर सर्व डॉक्टर एकत्र आले तर आपण काय करू शकतो हे करोना काळात आम्ही दाखवून दिलेलं आहे. आणि या TDFचा मेन हेतूच हे आहे की रुग्णसेवा त्याच्यासोबत एकत्र येऊन डॉक्टरांचे कोणते पण प्रॉब्लेम असेल ते सॉल्व्ह करणे. त्यासाठी आपण TDFच्या माध्यमातून त्या दुर्गम भागामध्ये जाऊन रुग्णसेवा देणार आहोत. आणि TDFचा मेन उद्देश म्हणजे डॉक्टरांना एज्युकेटेड करणं. सगळे डॉक्टर एज्युकेट झाले त्याचे प्रॉपर ट्रीटमेंट हे करू शकतात. नवीन आलेल्या लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी वगैरे इथे आम्ही CMEच्या माध्यमातून प्रत्येक डॉक्टरांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. ज्या काही नवीन लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी असतात त्या बऱ्याच डॉक्टरांपर्यंत म्हणजे आमच्या GPपर्यंत पोहोचत नाही. हा CMEचा उद्देशच ते की त्या डॉक्टरांपर्यंत त्या टेक्निक पोहोचाव्यात आणि त्यांनी त्यांच्या पेशंटला त्या सेवा पुरवाव्यात. नवीन इनिंगची सुरुवात एकदम धमाकेदार झाली आणि असंच धमाकेदार झाली की ह्याचप्रमाणे आपण सर्व जेवढे कमिटी मेंबर आहे असंच उत्साहाने काम करायला पाहिजे अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा करतो. आणि आपला जे मेन मेटो आहे की एक डॉक्टर्स वेलफेअर आणि दुसरा सोशल डेट मीन जे काय आपले कॅम्प्स वगैरे जे लोकांसाठी ग्रामीण भागासाठी जे आमचा जो मोटो आहे की खरंच तर ग्रामीण भागामध्ये आमची फार गरज आहे. लोकांना काहीच आरोग्याबद्दल सुखसुविधा भेटत नाही तर ते सगळे आम्ही पूर्ण करणार आहे. आणि असा या तुमच्या माध्यमातून आम्ही
गवाही देतो की पुढच्या पूर्ण महाराष्ट्रापर्यंत आम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. पावसाळा आता जवळ येत आहे तर जे झोपडपट्टीतले लोक राहतात लहान मुलं त्यांच्यासाठी पावसा येस पावसाळ्यात आता आम्ही प्रत्येक सिजनल पॉईंटमध्ये आम्ही आहे ना आता पावसाळा सुरू होऊन देणार त्याच्यासाठी काळजीसाठी आम्ही पॅम्पलेट आणि डॉक्टर फाउंडेशन काढलाय की घरोघरी आम्ही वाटप करणं की तुम्हाला काय करायचं आहे, गरम पाणी उकळून प्यायचं, कसा प्यायचा, कसं तुम्ही हे मलेरिया डेंग्यूनी तुम्ही करू शकतात. आणि आम्हाला रेग्युलर कॅम्प जेवढेच गरजे ते स्लम एरियाज आहे जिथे गरज आहे तिथे आम्ही मेडिकल कॅम्प करणार आणि त्यांना जे काय औषध वगैरे जे वाटप जे गरज असेल ते सगळे आम्ही प्रोव्हाइड करणार. जी एक कमिटी मेंबर आहे आणि TDF हे फार मोठ्या जोमाने काम करत आहे. आम्हाला भरपूर सपोर्ट्स आहेत इथे डॉक्टर्सचे आणि मेन मोटो ऑफ TDF आहे एज्युकेशन ऑफ डॉक्टर्स वेरियस मेडिकल कॅम्प करणं. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रुग्णांना सेवा देणं आणि मास एज्युकेशन करणं वेगळेच कॉन्फरन्सद्वारा जेणेकरून आजचे नवीन जे अपडेट्स आहेत मेडिकल फॅकल्टीजमध्ये प्रत्येक डॉक्टरपर्यंत व्यवस्थित पोहोचतील आणि नवीन नवीन टेक्नॉलॉजीज ज्या येतात त्याची पण माहिती बऱ्याच डॉक्टरांना मिळेल. याचबरोबर बाकीचे आमचे डॉक्टर्स करता ॲक्टिव्हिटीज लाईक स्पोर्ट्समध्ये आमचे आता नवीन क्रिकेट मॅच होणार आहे. त्याच्यावर कल्चरल्स पण प्रोग्राम्स आहेत जेणेकरून डॉक्टरांना सगळ्या क्षेत्रामध्ये पुढे यायचा किंवा सगळ्या क्षेत्रामध्ये पार्टिसिपेट करायचा मोठा वाव आम्ही त्यांना भरपूर मोठा स्कोप त्यांना इकडे मिळणार आहे आणि मोठा एक प्लॅटफॉर्म ग्रुपसाठी मिळणार आहे. आमचे फाउंडर डॉक्टर अशोक तिवारी सर हे एक खूप पॅशनेट आणि डेडिकेटेड आहेत आणि त्यांचं मी मनापूर्वक थँक्स मानते ज्यांनी हे फाउंडेशन चालू केलं आणि त्याच्यामुळे बऱ्याच डॉक्टरांना याचा खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळतो. आज TDFचं आमचं इनॉग्रेशन झालं की TDF आमचं ठाणे डॉक्टर फाउंडेशन आणि त्याच्यामध्ये मी डॉक्टर सुहासिनी मिश्रा माझ्याबरोबर डॉक्टर सानिया साबुरकर लेडीज विंग चीफ आहे. तर आम्ही गावामध्ये जाऊन भरपूर कॅम्प तसे पण पहिले पण केलेले आहेत आणि आता पण करणार आहोत. आणि आता नवीन सर्व्हिकल कॅन्सर आलेला आहे त्याबद्दल ज्या मुलींना 14 वर्षाच्या मुली झालेल्या आहेत आणि 15 वर्षाच्या आत तशा मुलींना पण वॅक्सिनेशन करण्यात येणार आहे. HPV वॅक्सिनेशन करण्यात येणार आहे. तसं आम्ही ठिकठिकाणी आम्ही आमची ड्युटी पण करतो. जसं मी TMC मध्ये आहे, मी कोरस हॉस्पिटलमध्ये आहे, मेडिकल ऑफिसर आहे. तरीसुद्धा आमच्या असोसिएशनमध्ये वेळ देऊन आम्ही आमचं CME पार करतो किंवा आम्ही क्रिकेट असू दे, लेडीजची काही फंक्शन असू दे, आम्ही सगळे करतो. हळदी कुंकू करतो, असे प्रत्येक फंक्शन आम्ही पार पाडतो. असं ह्यासाठी आम्ही हे ठाणे मेडिकल फाउंडेशन हे उभं केलेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये आम्हाला खूप आनंद होतो आहे आणि ह्याचे प्रेसिडेंट आहे डॉक्टर तिवारी सर. डॉक्टर